ओके मॅम. तुझं बंद कर. हा, हो, तर हो. मॅडमचं ओपन होईल. 1 मिनिट. ये तो वो वाला स्क्रीन है ना, जो एक वो बना. मैम शैल वी स्टार्ट शेयरिंग मैडम स्क्रीन? मैम 1 मिनट, ये स्नेहल बंद करेंगी तो ही आपका शेयर होगा. या. हाँ, ये नाउ स्टार्ट मैम. ओके. या मैम. अभी देख सकते. हाँ, Chakrashri, Yeah. start the talk. उन लोग को invite. No ma'am, we have to start the program. Okay. Ma'am, please stop the sharing this. इसको sharing को stop करके. उसको मिनिमाइज करके रख दे तो इमोजी कैन शेयर हर स्लाइड्स. हमने तो बोला कि अभी प्रोग्राम स्टार्ट करना है ना, वो मेरे को कॉल करेंगे फिर मैं बोलना चाहती हूँ. अभी ऑफिशियल नहीं, उसने क्या बोली तुम इसको मिनिमाइज करके रख दो क्योंकि अभी उनको अपना स्क्रीन दिखाना होगा ना. जब ऑफिशियल कॉल करेंगे फिर आपको शेयर करना है ना. वो बोली मिनिमाइज करके रख दो. जब बोलेंगे तो ये शेयर. चल कांचन शुरू कर. Oh. Snehal, unmute. Unmute. Good evening, everyone. This is Dr. Snehal Nathre. I welcome you all on behalf of NGS for National Nutrition Week. So let us begin our today's session. Let us take a glimpse at today's activity. So we'll have 3 sessions today. First talk is Nutrition PNC Mothers by Dr. Neelam Punyani ma'am, then Get Glamorous session, and then Financial Literacy Asset Allocation. Because of certain circumstances, we are not having today with us Dr. Alka Mukherjee ma'am. So today, welcome address will be done by the dynamic personality, Dr. Varsha Dhavle ma'am, the President-elect for 2022-2023. Over to you, ma'am. Thank you, Snehal. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So really, this has been a great evening for me. Maybe Alka has given me this chance, and I'm feeling so happy about it. On behalf of NOGS, NKP SIMS, and Lata Mangeshkar Hospital, I welcome you all today for the final webcast of this National Nutrition Week. We have seen that throughout the week, it has been a wonderful week with wonderful lectures. And this was quite an intellectual idea by our president, Alka ma'am, ki healthy, wealthy, and wise, right? Nutrition wise, we are very good and healthy, right? Everyone is talking, everyone has given wonderful lectures, whether it was for the adolescents or adults, whether it was for ANC patients, and now finally we are coming up with PNC patients. Likewise, again, we have been beautifying ourselves, right? Getting glamorous. We have a very good speaker today. So, and the third one is, of course, the financial literacy, with which we as doctors are not very much on the forefront, but we should be knowing. So it's a very good combination of being glamorous, being healthy, being wise. And today is the final webcast of this. And I wish all the speakers all the best. We have with us Dr. Neelam Punyani. She is a very dynamic speaker. We have heard her so many times. We have with us Poonam Khandelwal, and we have, of course, the financial expert, Lakshmi Chaudhary. I am also thankful to the chairpersons from NKP. NKP has always been so cooperative and helpful. Thank you, Savita ma'am, Pallavi, and Sayunka. So I think we move over and let our first speaker take on the stage, and let us all enjoy our today's evening. Thank you so much. Thank you, Kanchan. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your presence and your kind words. Now let us begin on today's first session, Nutrition and PNC Mothers. Before that, sorry, I would like to hand over the session to Kanchan ma'am for delivering the vote of thanks. Very good evening to all. It's pleasure to thank our dignitaries on behalf of NOGS and NKP SIMS and LMH. I thank Dr. Varsha Dhavle ma'am
for joining us and welcoming the audience. I thank Dr. Alka Mukherjee ma'am, who is the brain behind this program, and for her constant encouragement and help to organize this program. I thank our own Dr. Sulba Joshi ma'am, Dr. Anuja Balerao ma'am, Dr. Kauthakar ma'am for their constant encouragement and help for organizing this effort. I thank our eminent speaker, Dr. Neelam Puliani, in advance, who will be speaking on nutrition in PNC mother. I thank our next speaker, Mrs. Lakshmi Chaudhary ma'am and Poonam Khandelwal, who will be giving tips and tricks about beauty and wealth. I thank our chairpersons for today's session, Dr. Savita Somalwar ma'am, Dr. Pallavi Khangar, Dr. Sayukta Dave for chairing the session. I thanks our MOC, Dr. Snehal Napde, for nicely mastering the ceremony. I thanks the Kapil, Jignesh and Shubham from Energies for all the technical help. Lastly, but not least, I thank our audience for joining us. And I thanks one and all. Thank you. Over to you, Snehal. Thank you, ma'am. The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent diseases with nutrition. Let us begin our first talk with this quote. Nutrition in PNC mothers. For this talk, we have the eminent speaker with us, Dr. Neelam Punyani ma'am. She is a practicing gynecologist and sonologist since last 26 years in East Nagpur. She is a winner of President's Award and gold medalist in final MBBS, running an ultrasound center recognized by FOXY for basic and advanced course of ultrasound training. She has a recognized center for genetic counseling and prenatal diagnostic procedures under the PNDT Act 1994. She is being the recipient of National Anandibai Joshi Health Award. To chair this session, we have a very kind-hearted and soft-spoken person, Dr. Savita Somalwar ma'am. She is Associate Professor at NKP SIMS. She is undergraduate and postgraduate teacher with a teaching experience of 24 years. She is having many national and international publications to her credit. She is a certified instructor of American Associations of Family Physicians for basic life support in obstetrics and advanced life support in obstetrics. We welcome Dr. Neelam Punyani ma'am and Dr. Savita Somalwar ma'am. Over to you, Dr. Neelam Punyani ma'am. You can share your screen, ma'am. I will stop sharing. Hello. कहाँ से बदलेंगे? होम में जाके बाद में. Yes, Yeah, ma'am. We can see your screen, ma'am. Thank you, Snehal. Today, let us talk about diet in PNC patients. So diet after the delivery. There are so many things to eat after the delivery to make it very enjoyable and pleasurable time. Let us see how many things we can discuss in 20 minutes. All of us know that motherhood is the most cherished moment in a woman's life. Birth of a child is one of the greatest joy in life. Safe delivery is considered to be a rebirth of a woman. Don't forget yourself after your delivery. Now, what are the expectations of a PNC mother? To have a healthy, happy, and stress-free life. To have a good amount of breast milk secretion. And to have a good mental and physical recovery from the birth trauma. We want a satisfactory growth and weight gain of the baby. She wants a tender, loving care from the family. As mothers are the backbone of the family, so take utmost care of a PNC patient in the puerperial period. Delivery and breastfeeding is really a vulnerable time. Inadequate nutrition can affect both mother and child. It is strong risk period for developing various diseases like anemia, decreased immunity, osteoporosis, various type of wound infections, rheumatoid arthritis, and constipation. The mother's nutritional status decides the health of the infant and determines the child's future health. Good nutrition gives the child the best start in life. Lactation is a period in which a woman requires highest energy and needs extra 500 kilocalories per day. Priority nutrients during pregnancy are
vitamin B1, B2, B6, B12, or fat soluble and water soluble vitamins, iodine, folate, selenium, calcium, iron, zinc, DHA, choline, protein, and good quality of unsaturated fatty acids. All these nutrients and micronutrients help to improve quality and quantity of the breast milk and mother's health too. Now, see, what are the benefits of breastfeeding for infant? It's a perfect and complete food for first 6 months for a neonate. It guarantees safe and fresh milk. It promotes against food allergies and intolerances. It enhances the immune system of the baby. It decreases the risk of diarrhea and respiratory infections. It promotes correct development of jaw, teeth, and speech patterns. Breastfeeding decreases the risk of child obesity. Breastfeed increases cognitive functions of hand and eye coordination. It increases bonding with the mother. You can see how the baby grows from a toddler age to an adolescent so fast. And suppose if a baby who grows up around a healthy and happy mom can build a good life of herself and contributes towards society much more meaningfully. So, what are the benefits for mother of breastfeeding? It promotes faster shrinking or faster involution of the uterus and less postpartum bleeding. It promotes faster return to pre-pregnancy weight. It eliminates the need for preparing and mixing formulas. Breastfeeding saves money spent on formula feeds. It decreases the risk of breast and ovarian cancer in long term. It increases bonding with the infant. It enhances self-esteem in the maternal role and delays the menstrual cycle, for which if she develops lactating amenorrhea, and that prevents her from unwanted pregnancies. Now, this is a very good chart of a balanced diet to be eaten by a post-delivery mother, which says that you should take cereals, legumes, roots, tubers, green leafy vegetables in plenty, fresh fruits and meat, thin meat, then lean meat, eggs, poultry. You can take along with the milk products, but you should avoid too much of sweets, oily foods, deep fried foods, and unhealthy fats. Now, improving the quality of breast milk and infant health is by improving the micronutrient status of the diet, which can improve the quality of the mother's milk. Iron and vitamin B6 levels, they increase mother's attentiveness to child rearing and development. Now, let us see what are the important macronutrients for a mother, out of which the iron is one of the most important micronutrient required for correction of anemia. She needs almost 38 milligram of iron per day. Anemic mothers have insufficient milk syndrome. Mothers should be given foods like dark green leafy vegetables like broccoli and spinach, nuts, beans, peas, rice flakes, jaggery, wet dates, then organ meat, poultry, eggs, fish, kidneys, and liver. Anemia is most common nutritional deficiency in PSC caused by increased loss of red cell mass and increased requirement of the blood as such. Iron absorption is enhanced by vitamin C, and hence all citrus fruits, fruit juices, oranges, mosambi, bell peppers, tomatoes, and fermented foods along with amla and guava should be there in her meals. Then again, calcium is again one of the most important mineral required, and the daily intake of calcium is about 1000 milligram per day. She should avoid consumption of soft drinks and caffeine because it contributes to low calcium intake in PNC mother. She should be given very calcium-rich food, which helps in development of strong bones, teeth in the mother as well as baby. The sources of calcium are
milk, yogurt, curd, paneer, green leafy vegetables, and sea fish. Now, DHA is also a very important micronutrient. A minimum daily DHA intake of 200 milligram per day is recommended to pregnant and lactating women to support both maternal and infant health. Early dietary intake of DHA is essential for healthy heart, brain and nervous system and visual activity of the baby. The rich sources of DHA are fatty fish, flax seeds, which contains very healthy omega-3 fatty acids, then sunflower oil, safflower oil, and sesame, commonly called as till. Now, fibers and diet has got a very, very important role. If the mother is not taking a fiber-rich diet, she'll end up into constipation. Lack of fiber will leave her in pain and feeling uneasy, and eventually leading to severe constipation and hemorrhoids with bleeding piles. And hence, she should take lot of fiber in her diet in the form of beans, papaya, broccoli, cabbage, carrots, French beans, green peas, and spinach, along with lot of plenty of water. Sometimes she may have to take the help of galactogogues, which are synthetically available. They are derived from the plant sources and they maintain and increase the milk production. Fenugreek, silymarin, and shatavari. These are the herbs that increases the prolactin levels in the body, thereby increasing the lactation. We must know about the post-pregnancy meal plan. Ideally, a PNC mother should be given minimum 6 to 8 meals per day, out of which 3 should be her major meals, that is breakfast, lunch, and dinner. And rest of the times, she should be given 5 to 6 servings with different traditional heritage recipes, which are perfect combo for minerals and micronutrients to boost the milk production. Some time-tested traditional old remedies of our grandmas are still in use, and we have gone through the books. They are really scientifically proved elements which are added in these remedies. They can be soaked almonds, dry fruits, fresh fruits, 1 teaspoon full of warm ghee with milk, then gond laddus. You can see over here, these are very tasty, mouth-watering gond laddus made up of ajwain, then coconut, then jaggery, and all dry fruit mixtures. She can be given, and methi seeds also. She can be given in between the major meals, a bajra kheer, ajwain paratha, sometime boiled eggs, then a water which is boiled along with fennel seeds and olive laddus can be given. Her diet should be rich in alpha lipolic acid. Flaxseed is a good source of alpha lipolic acid. She can be given in between moong dal ka khichdi, homemade dahi. Then sauf and jaggery can be given after the lunch and dinner to improve her digestive capacity. Ragi can be used. It is a rich source of protein. You can make ragi ka halwa, dosa, chapatis, and kheer also. You can make badam halwa. Then til chutney is very, very famous in the Maharashtrian families. This til contains omega-3 fatty acids. So either black til, white til you can use. Then upma with the veggies. Milk with haldi and ginger can be given in the night time, or milk with sauf or with dry fruit powder. Harira is again a very famous, traditional, commonly used kheer made up of dry fruits. It improves the quality of hair and skin and nails of the baby as well as the mother. Then coconut poppy seeds kheer improves the sleep quality and helps in recovery. It can be given after the dinner. Then balantani chai and kadhas and wraps along with boiled water containing ajwain and fenugreek seeds are very commonly used for the PNC mothers. Recipes made by dil, that is very commonly known as shepu, and leaves of drumsticks are also very useful because they contain lot of micronutrients. She should eat all seasonal fresh foods, all vegetables,
grains and pulses. Fresh pickles and chutneys like ambe haldi and mango ginger चे लोणचे, mushrooms चे लोणचे are rich sources of B12 and they improve the insulin response, which helps in reducing her weight gain which she has gained during her pregnancy naturally. Home-set curds are good sources of gut-friendly bacteria of vitamin B group and lactobacilli and keep acidity under control. Now, all these girls are taking very healthy diet, you can see. What not to do is more important. Do not drink alcohol or at least restrict the alcohol intake. It can pass in the breast milk and causes irritability in the baby. Avoid smoking. It reduces quantity of milk secretion. Not to take too much of coffee, tea and cola drinks. All these drinks contain caffeine, which can pass in the breast milk and causes sleep disturbances in both. Avoid processed foods, packed foods, and high-calorie deep-fried products with too much of sugars should be avoided. It will unnecessarily add weight to the mother. Medications can pass into the breast milk. So ask your doctor before taking any medications apart from calcium, vitamin supplements, vitamin D, and iron you can take freely. Not to restrict the fluid intake. This is a very common myth among our society. Don't give her too much of water. Uska pet bahar aa jayega. So please don't restrict the fluid intake. She can take 8 to 10 glasses of fluids in the form of milk, curd, juices, and hot soups. Not try to lose weight gain of pregnancy fast. Do not go for strenuous exercises. When you will come back to your routine activity, you will reduce the weight automatically which you have gained in the pregnancy along with your correct dietary habits. Now, myths and busters. There are a lot of myths among the various regions and various states in the family. These are very common questions we come across in the OPD. Madam, can I eat banana? Yes, she can eat. But my mother-in-law says it causes cold to the baby. No, it never causes. It is a good source of fiber and vitamins and iron. Can I eat papaya? Can I eat rice and pickles? Should I drink plenty of water? A big yes to all the questions. But you have to advise them not to take fast foods and the food, open food from the thelas outside. Because all these foods are high in calorie content, high in fat, sodium content. They are low in fiber, which can cause obesity, hypertension, heart disease in long term, diabetes, cancer, and constipation. Fast food contains harmful preservatives. So as far as possible, avoid them. Choose low calorie and low fat meals and snacks and desserts with the low calories and low sugar levels. So have fresh fruit juices and hot vegetable soups. So the take-home message is, what are the benefits of remaining healthy in puerperium by taking a healthy diet? Yes, you will become beautiful from within. You will remain away from depression and stress. These healthy diets will prevent them from puerperial psychosis. They can enjoy motherhood as well as breastfeeding the baby and PNC leaves and as well as variety of healthy foods. To remain more energetic and becoming responsible for taking care of the baby and herself. To become more confident with good self-esteem so that she can mentally prepare herself for the next pregnancy as well. Now, the last but not the least, a big no to social media. One thing today that distracts the young mommies is checking emails in the night, playing Candy Crush in the night, or updating status on Facebooks or Instagrams in the night with the baby. The baby is neglected, the breastfeeding is neglected. So don't do that. Allow your hypothalamus pituitary ovarian axis to unwind. Don't subject your hypothalamic pituitary axis to light and stimuli from these gadgets. Next day you will wake up tired,
and bloated because of these distractions. Thank you for your patient hearing. All of us know that measure of discipline is a measure of love. Life is a game of rules. Don't break the rules. Thank you so much for your love and support and patient hearing. Thank you, ma'am. We really appreciate your time and effort that you have taken to make this talk so interesting. It was really crisp talk, and we would definitely love to have that Gond Laddu. I hand over the session to Savita Somalran ma'am to sum up. Hello everyone. At the outset, I would like to thank the NOJ's President Alka Mukherjee Madam, Ashish Kubde sir, Secretary, and Varsha Dhawale, President-elect, for giving me this opportunity. I also like to thank Dr. Kanchan and Dr. Snehal. And I like to congratulate Neelam Madam for nicely covering all the aspects and how it is very important to take a well-balanced diet, which is homemade, traditional, and as you have nicely said, it should be rich in fiber and plenty of oral fluids. There is always a myth, many myths attached to it, that you should not drink too much water and like that. And I want to add that counseling of diet should start in antepartum period only, because there are so many myths, and counseling of mothers and mother-in-laws. That is, I think, is very, very important, because there are so many myths. She should not drink fluids, or she should not eat the fresh fruits. So as you rightly said, that the fresh fruits are very, very essential along with the all nutritional things. So thank you very much, madam. It was a very informative talk. Thank you. Thank you, ma'am, for chairing the session. Thank you, Punyani, ma'am. Now let's begin another session. As Neelam ma'am said, don't smoke, but let your eyes smoke. We'll start the Get Glamorous session about smoky eyes. I hand over the session to Poonam Khandelwal ma'am, who is a renowned makeup artist. Hello. Hello. Yes, ma'am. Hi, ma'am. Just a minute. I'm not able to share. Hello. 1 minute. Yeah. Okay, you can begin the session. Hello. Hello. You are audible, ma'am. Yeah. जी आज जो हम सीखेंगे वो स्मोकी आईज है. सो स्मोकी आईज बहुत ही इजी है, जो इजीली आप खुद अपने सेल्फ मेकअप में आप कर सकते हो. सो आई एम डूइंग दिस फर्स्ट कि मैं पहले से कंसील कर रही हूँ आईज को. आपके स्किन अकॉर्डिंग जो भी कंसीलर आपके पास होगा आप उसको भी आईज पे लगा सकते हैं. मैंने छोटा सा ब्लेंडर लिया है एंड इससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ. आप अपने फिंगर टिप से भी इसे कर सकते हो. इफ अगर आपका क्रीम प्रोडक्ट है, लिक्विड है, तो आपको ब्लेंडर की जरूरत पड़ेगी. अभी जो भी आपके पास ट्रांसल्यूशन पाउडर होगा, आइदर नहीं तो कॉम्पैक्ट भी अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हो. I'm taking this brush for my powder. मैंने अपना ट्रांसल्यूशन सेटिंग पाउडर लिया है एंड उसको हल्का सा डस्टिंग कर रही हूँ, ताकि मैंने जो बेस लगाया है पहले आई प्राइमर जो मैंने यूज किया है वो मेरा जगह से हटे नहीं, लॉन्ग लास्टिंग रहे, और मैं जो भी कलर इसमें एप्लीकेशन कर रही हूँ वो इजीली लॉक्ड हो जाए.
Now I'm taking this fluffy brush and I'm using this Huda Beauty palette. It's a matte palette. It's the best palette for the smoky eyes. इसमें सारे कलर्स है आपके पास. ट्रांजैक्शन करने के लिए भी सॉफ्ट कलर्स है, क्रीमी इफेक्ट देने के लिए भी कलर है ब्राउन में, एंड देन ऑल कलर्स आर फॉर द स्मोकी. सो आई विल टेक दिस वन फॉर माय क्रीज लाइन. जहां आपकी आईज खुल रही है, जैसे ओपन करो यहाँ पे, बस हमें यहाँ पे इसे ब्लेंड करना है, इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर. Again, I'm taking little bit of color. बिल्कुल हल्के हाथ से उसे राउंड में आपको ब्लेंड करना है. Now I'm taking this color, जो उससे अपर वर्क डार्क कलर है. हमारा जहां पर आईबॉल आता है, मैंने वहां पे इसे ब्रश को रख के जस्ट राउंडिंग में, सर्कुलर मोशन में मैंने इसे ब्लेंड किया है. मैंने अभी स्मॉल ब्लेंडर ब्रश लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफाइन काम करना है आईज के इस पे लेयर पे. सो आई एम टेकिंग दिस डार्कर वन. एंड जो हमारा लैश एरिया है आईज का, मैंने वहां पे इसे एप्लीकेशन किया है. Now I'm using this black Kajal pencil from Revlon. जो मेरा लैश लाइन है, मैंने उस पे हल्का सा लाइनर, जैसे हम लाइनर लगाते हैं, बस लाइनर की तरह ही मैंने इसे अप्लाई किया. Again, I'm taking same brush with the same color. जो मैंने काजल लगाया, मैं उस पे ब्लेंड कर रही हूँ. That's it. Now second.
जो काजल लगाया बस उसे मैं कलर एक डार्कर वन कलर से उसे ब्लेंड कर रही हूँ, दैट्स इट। नीचे में हल्का सा जो आई शेडो गिरा है मैं उसे डस्टिंग पाउडर से डस्ट कर रही हूँ, रिमूव। Now I'm taking this fluffy brush again and this color. और जो भी कलर्स है, जो भी मेरे लाइंस दिख रहे होंगे आई शेडो में, मैं उसे कवर कर रही हूँ, उसे ब्लेंड कर रही हूँ इस कलर से। That's it. I'm taking this small brush and और ये ब्रो बोन्स को हाईलाइट करने के लिए कलर यूज कर रही हूँ। इसमें व्हाइट एंड व्हाइट, सिल्वर एंड गोल्डन तीनों भी पिगमेंट्स है, सो काफी शेडेड दिखता है। जो हमारा ब्रो बोन्स है, जहाँ पे हमारा आई शेडोज आता है, बस मैं उसे हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। That's it. ये हमारा आज का सॉफ्ट स्मोकी आईज। हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you for sharing the secret of smoky eye. Can you please stop sharing your screen, ma'am? I would like to hand over the session to our chairperson, Dr. Pallavi. Sure. Ma'am. Hello, am I audible? Ma'am, no, just a minute. So, for sharing this session, we had Dr. Pallavi Khangar ma'am with us. She is having clinical and academic experience of 5 years. She's been trained in infertility, endoscopy, and ultrasound at Nadkarni Test Tube BB Center, Gujarat. She's been the second runner-up in Vidarbha level menopause quiz. She is an organizing member of various academic activities at NPP, SIMS, and LMH and NOGS Nagpur. She is a member of NOGS and ISCOG. She is a consultant obstetrician and gynecologist at Infinity Polyclinic, Omkar Nagar, Nagpur. Hand it over to you, ma'am. Thank you, Snehal. First of all, I'd like to thank Dr. Alka Mukherjee ma'am, Dr. Varsha Dhave ma'am, Dr. Kanchan ma'am, Dr. Bhalra ma'am, and NOGS for giving me this opportunity to chair this session. People say that eyes are the windows to a person's soul, and a girl's attitude and beauty reflects through her eyes. And today, Poonam ma'am has taught us wonderful way to enhance their beauty. I thank her on behalf of everyone and appreciate her the efforts she is taking through all her sessions to teach us the ways of self-care and makeup. Thank you once again. And over to Dr. Snehal for further proceedings. Thank you, ma'am. Thank you. Let us begin our third session, financial literacy, asset allocation. It is said that asset allocation is not that different from what Mama told us while growing up. It is like, do not put your all eggs in one basket. So let us see what Lakshmi Chaudhary ma'am has to serve to us
with her lecture. Lakshmi Chaudhary ma'am, she spent more than 18 years working in financial industry, including 16 years at DSP Mutual Fund. She also conducts workshops on personal finance education for children. Over to you, Lakshmi ma'am. Chairperson for this session, Snehal. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chairperson for this session is Dr. Sayukta Davle. She is assistant professor at NPT Sims and LMH Nagpur. She has clinical and academic experience of 6 years. She has undergone huge training in fertility at reputed Nagarkarni Institute, Gujarat. Over to you, Lakshmi ma'am. Thank you so much, Dr. Snehal. Yes, ma'am. Just confirm once I'm audible to you. Yeah, ma'am. Okay. Audible. Okay. Thank you, Ms. Poonam, and thank you, Dr. Neelam, for your valuable inputs. It was a treat hearing you, and it was so informative that I just lost in your respective topics and I forgot I have to present as well. As Dr. Snehal just told that it's all about not putting all your eggs in one basket. Today's topic is asset allocation. Here we'll see what are the asset classes and where all can I invest my money. So अब तक के हमने देखा कि इन्फ्लेशन पढ़ लिया हमने, फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस जानते हैं, इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस जानते हैं, डूज एंड डोंट्स हमने देखे रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स के टाइम. सो अभी हमारे पास पैसा है, लेकिन वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन है. जैसे डॉक्टर नीलम ने कहा, देयर इज अ बिग नो नो फॉर सोशल मीडिया. आई ऑलवेज सपोर्ट दैट थिंग, बिकॉज टू मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल मेकिंग यू कंफ्यूज दैट वेयर शुड आई पुट माय मनी, and subsequently it leads to getting detached with all these stuffs and let me go with the conventional method of investment. So let's simplify where you can invest your money. Let's get introduced to the asset classes. So we will cover that, the understanding the nature of various asset classes, choosing the appropriate asset class, and correct the asset allocation. It is about if you have already investment, if there is a necessity of any correction of any asset allocation, that we'll also see. So there are two types of asset classes. One is financial and one is non-financial. Under financial, first is debt asset class. Debt asset class में आते हैं आपके fixed deposit, बैंक का saving account, PPF, government schemes, etc. कैश में आता है आपका जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, जो आप डे टू डे के लिए यूज करते हैं, इट्स अबाउट दैट. एंड इक्विटी में आते हैं शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. ओके, म्यूचुअल फंड में भी दो टाइप रहते हैं, डेट म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड. नॉन फाइनेंशियल में आता है रियल एस्टेट, विच वाज योर यस्टरडेज टॉपिक. बुलियन एंड कमोडिटीज, बहुत लोग अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड अनाज में वगैरह भी, उनके कमोडिटीज में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं. सो दैट कम्स. एंड जो बहुत ही लग्जरी पसंद लोग रहते हैं, दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन द आर्ट्स एंड एंटिक्स, इसके भी स्कीम्स रहती है. So when it comes to asset allocation, they say that once you have amassed 2 nickels, it's a good idea to keep them in separate pockets and not in the same pants. So when we are talking about asset allocation, we should be having minimum 2 or more asset classes which have zero or minimal correlation. जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समझिए हमारे पास 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए को हमको 2 या 2 से ज्यादा asset classes में इन्वेस्ट करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, जो एक दूसरे से अलग हो. Okay. In short, don't miss the forest for the trees. Focus on the goals and not the prayer. So being in Nagpur, आप जंगल सफारी काफी जाते होंगे और कोई पर्टिकुलर पेड़ पसंद आया तो आप वहीं पे रुक नहीं जाते हैं, आप पूरा जंगल देखते हैं, right? So it's all about focusing the goals and not the players. So don't miss forest for the trees. Firstly, जो financial asset class में cash करके जो asset class है, it is very important for the reason that
कैश इज किंग। कैश इज किंग क्यों है? क्योंकि हमारा रोज का जो गुजारा होता है, उसके जो एक्सपेंस होते हैं, उसके लिए हमको कैश लगता है। एंड लेट मी हाईलाइट इट वेरी क्लियरली, कैश हियर मीन्स अकाउंटेबल कैश, व्हाइट कैश जो आप अपने अकाउंट में रखते हैं, वो वाली कैश, राइट? सो कैश इज किंग एंड कैश शुड बी अकाउंटेबल कैश। उसके बाद डेट एसेट क्लास में कैश हमने देखा, उसमें डेट में डेट म्यूचुअल फंड्स आते हैं, एफडीज आते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं। इस केस में क्रेडिट रिस्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जब हम डेट फंड में या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपना पैसा लेंड करते हैं, जिसके बदले में हमको इंटरेस्ट दिया जाता है। सो इसके रिटर्न्स के को क्या इम्पैक्ट करता है? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या रहता है कि हमसे अगर बैंक ने पैसा लिया एफडी के रूप में, और वो किसी गवर्नमेंट स्कीम में या कॉर्पोरेट स्कीम में पैसा लगा दिया, उनको पैसा वो देती है, और क्रेडिट रिस्क क्या रहता है? सामने वाला जिसको हम पैसे दे रहे हैं, उसको उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि हमने जो पैसा दिया है वो हमको वापस आएगा कि नहीं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। फिक्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ कूपन, मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बीच बीच में हमको थोड़ा सा पैसा मिलते रहना है, उसको बोलते हैं कूपन। कैपिटल सेफ्टी, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं डेट में, उसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो सेफ रहता है, कैपिटल इज सेफ। इट इज प्रोन टू इंटरेस्ट रेट एंड री इन्वेस्टमेंट रेट। इंटरेस्ट रेट मीन्स अगर आपने समझिए 8% पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है डेट में, और अगर कल जाके उसके इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो उसके इनवर्स में जाता है। इंटरेस्ट रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट रहता है? जो आरबीआई बैंक्स को लेंड करती है पैसा, उसका इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट या हमारे डेट म्यूचुअल फंड या डेट एसेट क्लास पे होता है। ये लेस वोलेटाइल रहता है इक्विटी एसेट क्लास से। इक्विटी एसेट क्लास जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे अभी। डेट एसेट क्लास में, डेट एसेट क्लास आई रिपीट, इसमें क्या आता है? आपका फिक्स डिपॉजिट आता है, आपका डेट म्यूचुअल फंड्स आता है। डेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमारा करंट इनकम या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स अगर कुछ रहने वाली है, उसके लिए डेट इज इंपॉर्टेंट, डेट में पैसा होना चाहिए। टू सूथ थ्रू वोलेटिलिटी, जैसे आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत शार्पली फॉल कर रहा है, शार्पली ऊपर जा रहा है। इस केस में जो पैसा आप डेट में रखते हैं उसका शेयर मार्केट में इम्पैक्ट नहीं रहता है। For deployment in equities when stocks crash, as I just said that अभी शेयर मार्केट बहुत बड़ा हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है। सो अभी अगर मेरे पास पैसा है तो मैं पूरा का पूरा बढ़ते हुए मार्केट में नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डेट फंड में पार्क करूंगी और थोड़ा थोड़ा पैसा मूव करूंगी। सो पार्किंग पर्पस के लिए डेट एसेट क्लास इज इंपॉर्टेंट। इन अदर वर्ड्स, हेल्थ को प्रिजर्व करता है डेट एसेट क्लास। नाउ इन केस ऑफ डेट, जैसे मैंने कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्पैक्ट करता है और इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है, और रियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट उसमें मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन उसमें वेल्थ क्रिएट नहीं किया जा सकता है। आपकी वेल्थ प्रिजर्व होती है बट वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती, ये शॉर्ट टर्म के लिए है आपके। और वेल्थ इसलिए क्रिएट नहीं कर पाती है क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स आपको डेट फंड में मिलते नहीं है, ठीक है, उससे कम में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आपका सेफ है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए है, और इन्फ्लेशन को बीट करने वाले चूंकि हमको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो वी शुड नॉट गो फॉर डेट, ठीक है, वी शुड गो इट ओनली व्हेन वी हैव अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, व्हेन वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल, प्रिजर्व आवर वेल्थ। नाउ इक्विटी अगेन, शेयर मार्केट में जो पैसा जाता है, अभी आप रोज सुनते होंगे न्यूज में, कलीग्स में या फ्रेंड्स में बात करते हैं कि शेयर मार्केट ये चढ़ा, ये गिरा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ।
ये होता क्या है शेयर मार्केट? बहुत मिसकंसेप्शन है, लेट अस सिंप्लीफाई इट. इट्स नथिंग बट आपके इर्द गिर्द जो आप प्रोडक्ट्स है जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, अगर मेरी कार है तो मैं मारुति के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ. अगर मेरा फैन मेरे ऊपर है तो एक बजाज या हेवल्स के फैन में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ. अगर मेरा बच्चा मैगी खा रहा है तो माय मनी इज अल्टीमेटली बेनिफिटिंग नेस्ले कंपनी. Okay, my kid is using stationery, it's going to Pidilite. I'm using footwear of Bata, it's going to that company. So equity यानी कि इसमें शेयर्स आते हैं, इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इसमें पैसा लगाना इज एज गुड एज इन कंपनीज के बिजनेस में पैसा लगाना है. ओके, सो शेयर मार्केट, शेयर इक्विटी म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट इन्वेस्टिंग योर मनी in the businesses of other companies, big companies that are listed in the share market. Okay, so these names or companies are just used for referring purpose. I'm not promoting here any of the companies, but this is just to make you relate to what you're using in day-to-day life. Okay, so this is all about equity, share market. पैसा हमारा दूसरों के बिजनेस में लगता है. So equity investment, it's not about stock prices कि मैंने कितने में खरीदा. ये जो लोग बोलते हैं ना, मैंने इतने में खरीदा, सस्ते में खरीदा, बढ़ते हुए दाम मिले मुझे. No, it's not about that. It's about owning the business. मैंने उस कंपनी में पैसा गया है, मतलब मेरा ओनरशिप है, मेरा शेयर है, मेरा हिस्सा है. ओके, और जब हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या आपका खुद का बिजनेस रहता है या आपकी खुद की प्रैक्टिस रहती है, तो क्या शुरुआत में ऐसा होता होगा या इंटरमीडिएटली ऐसा फेज आता होगा आपके प्रैक्टिस में कि पेशेंट्स कम आते हैं. ओके, फॉर सम रीजन पेशेंट्स कम आते हैं, एक नई प्रैक्टिस रही तो पेशेंट्स कम आते हैं. अगर हम रीलोकेट करते हैं तो फिर नए क्लिनिक में लोग आने को टाइम लगाते हैं. सो ऐसे कुछ फेजेस रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं ना कि हम वो बिजनेस या हमारा प्रैक्टिस छोड़ देते हैं कि 10 दिन में पेशेंट्स कम आए हैं, मैंने नहीं करना है, ऐसा नहीं है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग बिजनेस, राइट? सो आपका बिजनेस या आपकी प्रैक्टिस इज नथिंग बट अ इक्विटी. सो व्हेन यू आर talking about investing in equity, you always should think of investing in a long term basis. So equity investment is a way of life. Okay, and आपने सुना होगा जो noted बिलियनियर्स है और जो फेमस इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट, टाटा फैमिली, ये इतने रिच कैसे हुए हैं? ओनली एंड ओनली बाय कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, या बिजनेस में पैसा लगा लगा के ही वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है. Why equity? Simply speaking, the only way to get ahead with time. Get ahead with time again indicates inflation. Okay, और inflation को beat करने वाला ये product है. It's ideal for your long-term goals. Long-term goals, child education, retirement planning, child marriage, long-term goal हो गया, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 10 साल तो भी है, 8-10 साल. So we'll constitute them in long-term goals. It could make money in short term also, बट विल मेक मनी इन लॉन्ग टर्म. हो सकता है 1 साल में भी आपको गेन आ जाए, जैसे चढ़ता मार्केट है अभी तो, बट आइडियली लॉन्ग टर्म में ये अच्छा मनी देता है, अच्छे रिटर्न्स देता है. यू शुड यूज इट, यू शुड यूज दिस असेट क्लास फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस. इन अदर वर्ड्स, इट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन. हमने डेट में देखा था वेल्थ प्रिजर्वेशन उसका फायदा है. व्हेन इट कम्स टू इक्विटीज, इट इज ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन. ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये ग्राफ, आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ. सो वक्त के साथ हर जख्म भर देता है. इसका मतलब यही है कि जितना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहते हैं, आपके रिटर्न्स जो है ऑन एन एवरेज डिसेंट आते हैं. सो ये 3 कलर्स की लाइंस है यहाँ पे. नेवी ब्लू कलर है, ब्लू कलर विच शोज द नेगेटिव रिटर्न, पर्पल कलर विच शोज एवरेज रिटर्न, येलो कलर विच शोज हाईएस्ट रिटर्न. सो अगर पहले 1 साल या 2 साल में देखेंगे आप कि निगेटिव रिटर्न बहुत ज्यादा दिया है, उतना ही वो ऊपर अपवर्ड भी गया है 264 तक. ठीक है, लेकिन आप 10 साल 15 साल जैसे जैसे यहाँ पे पीरियड बढ़ता जाता है, you will see that for long term investment there is nearly no difference between the lowest, average and highest return. आप देख रहे हैं तीनों लाइंस
टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म जुड़ जाती है। कहने का मतलब ये है दैट द बिगेस्ट हिलर ऑफ ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट whose टाइम स्पेंट इन द मार्केट इज वेल स्पेंट। सो लोग पूछते हैं ना आपको कितने कब इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मार्केटिंग द टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट इज इम्पॉर्टेंट। जस्ट स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ कि फ्रॉम द ईयर 1990 इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहा है वो 13.17 है, और सेंसेक्स में जितनी भी कंपनीज है उसका एवरेज रिटर्न 16 मिला है। इट्स अ डिसेंट रिटर्न, एंड सेंसेक्स खुद 16-17 बड़ा है। ये रिसेंट मार्केट अप डाउन छोड़ दिया हमने तो। सो गुड इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस वेल मैनेज कंपनीज हो तो there is a way for the wealth creation. Now, equity investments में कुछ don'ts कि buying low value stock, बहुत कम उसकी वैल्यू है इसलिए उसको परचेस करना है, बहुत कम NAV है इसलिए उसको परचेस करना है, ऐसा नहीं है। ओके, और लॉस हो गया तो सेल नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अगेन इट डिपेंड्स आप कब से इन्वेस्टमेंट किया है। माय ब्रोकर नोज एवरीथिंग, not always, you can ask and keep on checking as well. And बहुत लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड तो रिटेल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड इज अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स ऑफ बिगेस्ट बिलियनियर्स मिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड, Tatas and Birlas and Warren Buffett. They are all investing in the mutual funds or equities. Few truths about market and investment. Most likely it is a way of achieving above average return is to stop trying to beat the market. Market रोज कहाँ जा रहा है, गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, बढ़ रहा है, इसको लोग बहुत ज्यादा ना फॉलो कर देते हैं। अभी मार्केट ऊपर है तो मैं रुक जाता हूँ, अभी मार्केट क्रैश हो जाता है तो मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। नो, ऐसा नहीं चाहिए हमको। अगर आज मैं 15 साल के लिए अपने रिटायरमेंट फंड के लिए पैसे जमा कर रही हूँ तो अभी मार्केट क्या कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्लोबल जो सिचुएशंस है या ग्लोबल इवेंट्स है उससे आपको पर्सनल इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन पर्सनल इकोनॉमी एंड नॉट अ ग्लोबल इकोनॉमी। स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टर्म। ओके, एंड ऐसा भी हिस्टोरिकली देखा गया है दैट 100% रिटर्न्स आर मेड इन 7% टाइम। सो आप इन्वेस्टेड रहिए, जितने साल के लिए आपका गोल है, लक्ष्य है, उसको स्टिक करके रहिए। मार्केट कितना गिरता है बीच में नहीं है, बहुत टेम्पररी चीजें है। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि टू मच ऑफ न्यूज इंफॉर्मेशन, टू मच ऑफ बज ऑफ द मार्केट, ये बहुत अनकॉल्ड फॉर एंड अनहेल्दी नॉइज है। ओके, सो डोंट पे अटेंशन टू इट। जो न्यूज पे मार्केट स्ट्रेटेजीज बताते हैं, एनालिस्ट बताते हैं, 50 न्यूज 50 मैचेस इज नथिंग बट एन एंटरटेनमेंट। ओके, सो डोंट फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स, फोकस ऑन योर गोल्स। ओके, बाकी मीडिया, मार्केट ऑपरेटर्स, इनको आपके गोल्स से कोई लेना देना नहीं रहता। वो उस दिन का क्या इकोनॉमी है और मार्केट कितना गिरा चढ़ा है उसकी न्यूज देते रहते हैं, फॉर विच दे आर पेड फॉर। ओके, सो हमारा इंटेंशन, हमारा गोल। अगेन, diversify across all asset classes including your intellectual assets, your earning power here I mean. ओके, सो पूरा पैसा डेट में ही डालना है क्योंकि वहां पे कैपिटल प्रोटेक्शन है? नो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। या पूरा पैसा इक्विटी में ही जाना चाहिए क्योंकि रिटर्न्स अच्छे आते हैं? ऐसा भी नहीं। यू शुड स्प्रेड इन योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एसेट क्लासेस। देन reversion to mean of earnings in one of the most powerful forces in the universe. Bear markets are good for wealth creation. So market टूटा है इसका मतलब बहुत शोक मनाना या you're feeling bad about it, don't do that. Your goal है market गिरा हुआ है, if you have surplus money, better you invest into it. We have covered this point पहले भी कि हाँ, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझ गया, मुझे एसेट क्लास भी समझ गया, लेकिन ये मेरी नीड है क्या, ये आपको देखना है, एंड मेरी एबिलिटी है क्या, ऑफ कोर्स। एंड ये सब होते हुए भी am I willing to do financial planning? This is something that
you need to understand and execute. Okay, no one, I can teach you about importance of it, but if you don't execute it, this will only remain in a theory. Okay, so wealth creation को अगर actually आपको implement करना है, so you should be willing to do it and execute it. Risk reward. So when you are investing into equity mutual funds, share market, there is a risk associated. अभी risk क्या रहता है? आप हमेशा वो declaration सुनते होंगे, investment are subject to market risk and all. So market risk is nothing but a market fluctuation. जैसे मैंने कहा कि बिजनेस क्लास रहता है, आपकी प्रैक्टिस रहती है, कभी 5 ही पेशेंट्स आते हैं तो एक दिन में कभी आप 50 पेशेंट को मिल लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से इनकम कम ज्यादा होती रहती है. सिमिलरली योर मार्केट फ्लक्चुएट्स अप्स एंड डाउन्स, बट ये टेम्पररी डिक्लाइन रहते हैं, उसको हमको इग्नोर करके लॉन्ग टर्म पे हम फोकस करते हैं तो हमको डिसेंट रिटर्न्स मिलते हैं. सो एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन कि वो रिवार्ड है, बट nobody wants to die, of course, right? But in order to go to heaven, one must die. However, that does not even ensure the entry into heaven. This is just to make you relate of it, and this is bit blunt, but simply थोड़ा risk आप ले सकते हैं considering your financial background, your age factor, and your financial situation. Okay, then you can at least expect a good return over the long term. रिस्क या फ्लक्चुएशन टेम्पररी रहते हैं, सो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तब लॉन्ग टर्म करना है. अंडरस्टैंडिंग रिस्क, क्रेडिट रिस्क, जिसके मैंने कहा कि पेमेंट रीपेमेंट कैपेसिटी, वोलेटिलिटी रिस्क, मार्केट के टेम्पररी फ्लक्चुएशंस यानी कि अप एंड डाउन, इन्फ्लेशन रिस्क सबसे बड़ा मॉन्स्टर कि हमारे प्रोडक्ट्स इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देने चाहिए, हमको इन्फ्लेशन से बीट करने वाला प्रोडक्ट चाहिए. इन्फ्लेशन ही अगर 7% चल रहा है तो मैं 5% के प्रोडक्ट में डालू कि नहीं, इज अगेन अ क्वेश्चन यू शुड नीड टू आस्क योर एडवाइजर. सो योर पोर्टफोलियो शुड बी लाइक अ ग्रेट बैलेंस टीम, जहां पे आप देख सकते हैं लाइक अ क्रिकेट टीम, इट शुड हैव अ ग्रेट बैट्समैन, अ बॉलर, अ वाइस कैप्टन, अ गुड विकेट कीपर, अ गुड फील्डर. सिमिलरली आपका जो पोर्टफोलियो है, it should have a fair portion in each of the asset classes, and you should not over concentrate on a single asset class. अब कहाँ ओवर कॉन्सेंट्रेट करना है या कर दिया है, करेक्शन कैसे करना है, आगे कैसे जाना है, you should ask your advisor for that. With this, we come to the end of today's session, and I hope you understand the importance of asset allocation in your investments. And I thank you for being a patient listener. You've been a wonderful audience as usual. And do let me know for any queries or question you have, or you can also contact me here on this ID or mobile number. Now, I would request Dr. Sayukta Dawli to take over the session. Sayukta, are you there? Sayukta? Yes, ma'am. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Yeah. Thank you, Dr. Snehal. Good evening, everyone. Firstly, I would like to thank NOGS, Dr. Alka Mukherjee ma'am, Dr. Kubde sir, Dr. Kanchan Dwidmuthe ma'am, Dr. Anuja Bhalerao ma'am for giving me this opportunity to chair this session. Then I would like to congratulate and thank Lakshmi Chaudhary ma'am for such a nice presentation and worthy points on types of asset classes, debt investment, equity investment, and risk reward equation. We know how to make money, but we were totally unaware about how does our money work for us. Once again, thank you, ma'am, for your valuable advice and informative talk in all your session, how to manage our money and how to make it grow in proper direction for our better present and future. As rightly said, that the difference between success and failure is not on which stock you buy or which piece of real estate you buy, but it's asset allocation. Thank you once again. Over to you, Dr. Snehal. Thank you, Sayukta, for your precious time. Let us take question and answers. Do we have it? There are no question answers, Snehal. Okay.
आप और मैं Would you like to have a word, Kanchan ma'am? Yeah, there are no question answers, so we Okay. can conclude our session. So thank you everyone. Thank you Neelam ma'am. Thank you Lakshmi ma'am. Thank you Poonam ma'am for a wonderful talk. We will have a last session tomorrow on Sunday. That will be the last session of Nutrition Week. Please join for tomorrow, and thank you. Thank you, audience. थोड़ा बहुत करना ही पड़ता, नहीं तो भी खाना दिन भर काम नहीं कर सकते ना। नहीं थोड़ा बहुत नहीं करो दिन भर कर नहीं सकते। फर्स्ट टाइम देखा तो सुना क्या? मम्मी को बोलना नीलम आंटी आई बोलना। कभी ऐसे धूमधाम कपड़े का